In the name of Allah, most gracious, most merciful, praise be to Allah, the cherisher and the sustainer of the worlds. I welcome to all of you with the Islamic greeting that Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear guys, today we are going to start English grammar, but before starting any particular topic of grammar, some question arises into our grammar. The first question that arises into our grammar, that is, what is the right spelling of the grammar? The second question that arises into our grammar, that is, what is grammar? The third question that arises into our grammar, that is, why do we study or learn grammar for a language? And we can see what is the importance of grammar for a language. So my dear guys, first of all, we have to start and discuss these questions. After that, we can take or study any particular topic of the grammar. Guys, first of all, we discuss here what is the right spelling of the grammar. Guys, most of the students and the teachers making a mistake during the writing of the spelling of the grammar. Sometimes they write G-R-A-M-M-E-R, sometimes they write G-R-A-M-M-A-R. So dear guys, first of all, we discuss this question here. And I hope that you will not make again a mistake during the writing of the spelling of the grammar after understanding inshallah today clearly. Now let us start, my dear guys, with the discussion of the right spelling of the grammar. That is it is right spelling is G-R-A-M-M-A-R or G-R-A-M-M-A-R. G-R-A-M-M-E-R, or is it is right spelling is G-R-A-M-M-A-R. G-R-A-M-M-A-R. Guys, first of all, we discuss these two terms. I will tell you the meaning of this one, also this one, my dear guys. Most of the people are saying that both the spellings are the right, but my dear, this is the wrong idea. Now I will tell you the meaning of this one, after that this one. The meaning of this one is totally different from this one. Guys, now learn the meaning of this one. What does G-R-A-M-M-E-R mean? G-R-A-M-M-E-R. First of all, discuss this one. So I want to erase it for a while. Listen guys. Guys, एक्चुअली जो G-R-A-M-M-E-R है, ये किसी शख्स का नाम है, या हम यूं कहेंगे कि ये किसी खास जगह का नाम है USA में. तो दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर दिस इज दैट इज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके लिए वो ये भी है कि जब भी आपको ये वाला ग्रामर लिखना होगा, चाहे लाइन को स्टार्टिंग पे या एंड पे या सेंटर पे, तो खास ख्याल रखना जो इसका पहला वाला लेटर है यहाँ यानी जी, वो आपको हमेशा कैपिटल लिखना है. जिस जगह पे आप ये वाला ग्रामर लिखोगे तो खास ख्याल रखना हमेशा कैपिटल लेटर लिखना यानी जी. ये मेमोराइज कर रखना अपने माइंड में. Now we discuss the second one, my dear, also. But before if you want to learn in English this one, I can tell you the meaning of this one. G-R-A-M-M-E-R. Grammar is the name of a person or a particular place in the USA. Guys, G-R-A-M-M-E-R grammar means the name of a person or a particular place in the USA. Guys, I hope that you have understood it clearly and completely, and I hope that you will not make again a mistake after understanding the second spelling of the grammar. Now we discuss the second one, my dear. G-R-A-M-M-A-R. Listen, my dear guys, what the second spelling we are writing. G-R-A-M-M-A-R. Listen, my dear guys. Guys, actually जो G-R-A-M-M-A-R है, हम इसको उर्दू में इल्म कवाइद कहते हैं. इल्म कवाइद.
गाइस, अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इल्म कवाइद किसको कहते हैं, तो जवाब आप ये देना कि इल्म कवाइद हम उस इल्म को कहते हैं जिसके जरिए हम किसी जबान के, किसी लैंग्वेज की सही तरीके सीखते हैं, पढ़ने के लिए सही तरीके सीखते हैं, लिखने के लिए सही तरीके सीखते हैं, बोलने या बयान करने के लिए सही तरीके सीखते हैं, सुनने के लिए सही तरीके सीखते हैं, या समझने के लिए सही तरीके सीखते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वो इल्म जिसके जरिए हम किसी लैंग्वेज या जबान के लिए सही तरीके सीखते हैं, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, बोलने या बयान करने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए, उस इल्म को हम कवाइद कहते हैं उर्दू में, तो ग्रामर कहते हैं इंग्लिश में। जो ये ग्रामर है इसी को हम कवाइद कहते हैं उर्दू में, तो ग्रामर को फिर कवायदा कहते हैं उर्दू में, तो कवायदा को ग्रामर कहते हैं इंग्लिश में। गाइस, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल एंड क्लियरली। इसके अलावा में हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी जबान के जो कवानीन या उसूल होते हैं लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, बोलने या बयान करने के लिए, उन उसूलों को या हम कहेंगे कवानीन को हम कहते हैं ग्रामर इंग्लिश में। Guys, now we discuss some important points in English language also for grammar. What I declare here already, I write in English also now. Listen, guys. Grammar, what does grammar mean in English? G-R-A-M-M-A-R. Grammar. Guys, we can write here that grammar is the means by which we can learn to read, write, and speak any language correctly. That is known as grammar. Also, we can write grammar means simply the rules and regulations of any language. The rules and regulations of any language. That means grammar. Simply, grammar means the rules and regulations of any language. We can write also here some more points. We can also say that the science of the right use of language. Grammar means the science of the right use of a language. Or we can write here also, grammar means what? The set of rules. The set of rules. The set of rules and regulations that are used
to read, write, and speak of any language, of any language, of any language. Also we can write these are the definitions of English grammar. We can see also. Listen, my dear guys. We can see also English grammar. English grammar is the art of speaking, reading, writing, English grammar is the art of speaking, reading, or writing the English language. The English language. English language according to established rules. Established rules. गाइस मैं आपको फिर से कहूंगा एक बार कि जिसके जरिए हम रीडिंग सीखते हैं, राइटिंग सीखते हैं, स्पीकिंग सीखते हैं, लिसनिंग सीखते हैं या अंडरस्टैंडिंग सीखते हैं किसी लैंग्वेज के लिए करेक्टली, तो उसको हम ग्रामर कहते हैं. Guys, I hope that you have understood very well. Now I will tell you some examples by which inshallah you will understand more clearly. Guys, जो हमारा पहला क्वेश्चन था कि वो था कि what is the right spelling of the grammar? Guys, we will discuss the first question. The second question, we have discussed the GRAMMER, also GRAMMER. Now the second question was that was what is grammar? We discussed also that. Now the third question, that is why do we study or learn grammar, or why grammar is important for a language? Listen, my dear guys, why it is important, or why do we study or learn grammar for a language? We discussed it already. हम ऐसे कहेंगे कि ग्रामर इसलिए इम्पोर्टेंट है किसी जबान के लिए या किसी लैंग्वेज के लिए क्योंकि इसके जरिए हम क्या सीखते हैं, सही तरीके से सीखते हैं. हम पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए, लिखने के लिए, बोलने या बयान करने के लिए, इसलिए ग्रामर जरूरी है. तो इसीलिए हम ग्रामर पढ़ते हैं या सीखते हैं. तो now I will tell you some examples also regarding this. Why it is important? Why do we study and learn the grammar? Listen, my dear guys. इसके जरिए हम क्या सीखते हैं, सही तरीके पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, बोलने या बयान करने के लिए या समझने के लिए, सुनने के लिए. Listen guys, हम कैसे सीखते हैं. अगर मुझे कहना हो कि मैं एक स्टूडेंट हूं, तो अगर मैं यहां लिखूंगा I was a student. I was a student. गाइस, मुझे लिखना है कि मैं एक स्टूडेंट हूं. तो मैंने क्या लिखा है, I was a student. गाइस, ये टोटली रॉन्ग है. तो इसका मतलब है मैं एक स्टूडेंट था. तो मुझे क्या लिखना चाहिए, I am a student. This is right. This one is wrong. Why? Because it means मैं एक स्टूडेंट था, but this means मैं एक स्टूडेंट हूं. Instead of was, I have to write am. That is why what? This is incorrect. This one is what? This one is incorrect. This one is correct.
दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज इनकरेक्ट. दूसरी एग्जाम्पल, दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल. सेकेंड, अगर मुझे लिखना होगा कि वो एक खत लिखता है, वो एक खत लिखता है, अगर मैं लिखूंगा यहां he write a letter, he write a letter. गाइस यहां लिखूंगा मैं और he writes a letter. गाइस जो ये वाला है ये टोटली रॉन्ग है. क्या है? दिस वन इज रॉन्ग बट दिस वन इज राइट. दिस वन इज राइट. Why this one is wrong, this one is right? Because we know that when there are the third person singular noun, that is he, she, it. Suppose he, she, or it. We should use with these s or es. S or es. So here is he. After that we have right here right. So we must use here s or es, that is he writes a letter. That is why this one is what? Incorrect. This one is correct. We learning these points only by grammar. Only by grammar. And now the third example I want to tell you, that is, suppose if I write here I can teaching you. I can teaching you. And one sentence more, I can teach you. Guys, जो ये वाला है ये wrong है, ये wrong है, but this one is right. ये वाला wrong क्यों है? क्योंकि ये इसलिए wrong है, ये incorrect है इसलिए कि we know that after modal auxiliary verb there shouldn't be ing form. There should be first form of verb. This one is right. Why? Because after modal auxiliary verb there is first form of verb. That is why this is correct. Modal auxiliary verb means can, could, may, might, shall, should, etc. So dear guys, I hope that you have understood it very well. By which we are learning these points? Only by grammar. For example, by any topic of grammar, tense, parts of speech, etc. Guys, आप समझो ये भी कि जो ग्रामर होता है आप समझो कि एक कानून होता है, यानी एक गवर्नमेंट होता है किसी भी जबान के लिए. जैसे कि गवर्नमेंट होता है दुनिया में, अगर हम कोई भी गलती करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलता है गवर्नमेंट के जरिए. तो यहाँ भी हमें पनिशमेंट मिलता है. कैसे पनिशमेंट मिलता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां से सपोज ये अगर यहाँ एग्जाम होगा तो उन्होंने इस सेंटेंस में 1 मार्क्स रखा होगा सपोज इस मार्क्स में, यानी हमें लिखना है मैं एक स्टूडेंट हूं. तो मैंने लिखा आई वाज अ स्टूडेंट. इसका मतलब सीधा ही गलत है. मुझे लिखना चाहिए क्या? आई एम अ स्टूडेंट. अगर उन्होंने इसमें 1 मार्क्स रखा होगा तो पास के लिए भी 1 ही सपोज. तो जब मैंने ये गलत लिखा यहाँ, इट मीन्स दैट आई फेल्ड. So this is a punishment for me. Same is here. If there is 1 mark, there is 1 mark. Examiner when start the evaluation of the papers, what will happen? Because I have written some wrong, some I have wrote here but right. Suppose if I have written this one, suppose this one is what? This one is wrong. This one is wrong. This one is also wrong. So I failed here. I failed. I lost 1 marks. That is why this is a punishment for me. So मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो ग्रामर होता है ये कानून होता है किसी लैंग्वेज के लिए. Guys, I hope that you have understood it clearly and very well with these examples also. Now I tell you in nutshell under 2 minutes what I have taught you this time. Listen guys carefully. Guys, we will discuss regarding with grammar and grammar 2 spellings here. Suppose GRAMMER. Second one is GRAMMAR. Guys, हमें पढ़ा कि हमें अब पता चला कि जो ये वाला ग्रामर है किसी शख्स का नाम है या किसी खास जगह का नाम है यूएसए में, तो ये हमें हमेशा कैपिटल लेटर से लिखना चाहिए.
तो जो ये वाला ग्रामर है ये डील कर रहा है किसके साथ, किसी लैंग्वेज के साथ जिसके जरिए हम सही तरीके से पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, बोलने के लिए या बयान करने के लिए, लिखने के लिए, समझने के लिए। जो हम ग्रामर पढ़ते हैं, कभी हम पढ़ते हैं, चलो हम आज बोल रहे हैं कि हम टेनिस पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, वो सारा डील कर रहा है इसके साथ जिसके जरिए हम लैंग्वेज के सही तरीके सीखते हैं। तो गाइस, I understood it clearly now, and I hope that you also understood clearly. Now we understood that this one is what? This one is totally incorrect, and this one is right. This one is what? This one is wrong, and this one is right. The grammar we are studying or learning, that is this one. That is this one. And the second question was that what is grammar? I have told you that grammar means the rules and regulations that are used. The rules and regulations that are used to reading, writing and listening. Guys, हम ये भी कह सकते हैं कि जिसके जरिए हम क्या से ग्रामर हम उसको कहते हैं जिसके जरिए हम सही तरीके से सीखते हैं किसी जबान या लैंग्वेज के लिए, पढ़ने के लिए या बोलने के लिए या लिखने के लिए, तो उसको हम कहते हैं ग्रामर। तीसरा क्वेश्चन था कि व्हाई डू वी स्टडी और लर्न ग्रामर फॉर ए लैंग्वेज? हम इसलिए पढ़ते हैं ग्रामर क्योंकि इसके जरिए हम क्या सीखते हैं, सही तरीके से सीखते हैं किसी लैंग्वेज के लिए, पढ़ने सीखते हैं हम सही तरीके से, लिखने के लिए और स्पीकिंग के लिए। और जो भी हम गलतियां कर रहे हैं रीडिंग में, राइटिंग में या स्पीकिंग में, तो इसके जरिए हम वो गलतियां दूर कर रहे हैं। आई मीन दैट व्हेन वी आर रीडिंग और राइटिंग और स्पीकिंग एनी लैंग्वेज, वी मेकिंग जस्ट सम मिस्टेक्स, विद द हेल्प ऑफ ग्रामर वी आर रेक्टिफाइंग दोज मिस्टेक्स। दैट इज व्हाई वी स्टडी और लर्न ग्रामर, एंड दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्रामर। आई होप गाइस दैट यू हैव अंडरस्टूड इट क्लियरली and very well, and I hope that you will not make again a mistake during the writing or the spelling of the grammar in your future. Now, besides it, dear guys, this grammar, it was divided into 4 parts also, or we can say the 4 branches also. These are orthography, O-R-T-H-O, O-R-T-H-O, O-R-T-H-O-G-R-A-P-H-Y. This was the first one. The second one is etymology, E-T-Y-M-O-L-O-G-Y, etymology. Third one is syntax, S-Y-N-T-X, syntax. Fourth one is prosody, P-R-O-S-O-D-Y. Yeah guys, these 4 branches are parts we will discuss and study or learn in another video, inshallah. Till then, Khuda Hafiz. Assalamu alaikum.